rotation. So what do you mean? What do I mean when I say this particular crystal is having C2 axis of rotation? C2 axis of rotation means अगर आपने उस solid crystal को 2 का मतलब यहाँ पे 360 divided by 2 मतलब 180 डिग्री, अगर आपने उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को उस पर्टिकुलर एक्सिस पे 180 डिग्रीज घुमाने के बाद इफ यू आर गेटिंग बैक द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रिस्टल, then we can say that the crystal is having C2 axis of rotation generally. और अगर हम generally बात करें तो CN axis of rotation किसको कहेंगे? एक पर्टिकुलर क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर एक्सिस पे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इतने डिग्री से हम रोटेट करने के बाद अगर आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, देन यू कैन से दैट द क्रिस्टल इज हैविंग अ CN एक्सिस ऑफ रोटेशन. बच्चे क्लियर है ये? अभी ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट टॉपिक ऑन सिमेट्री एलिमेंट्स, वहाँ और डिस्कस करेंगे हम. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर अबाउट रोटेशन एक्सिस? एक रोटेशन एक्सिस किसको कहते हैं? ठीक है, और यहाँ पे इस टॉपिक में हम पर्टिकुलरली C5 एक्सिस के बारे में बात करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि एक एक्सिस कोई भी क्रिस्टल में C5 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. तो व्हाई यू हैव टू प्रूव दैट. C5 एक्सिस मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? कितने डिग्रीज घुमाना पड़ेगा इसको? 45. हाँ जी 72. हाँ 72 डिग्री. तो हम ये प्रूव करेंगे कि कोई ऐसा एक्सिस हो ही नहीं सकता कि 72 डिग्रीज रोटेट करने के बाद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आए. बाकी C2 एक्सिस पॉसिबल है, C3 पॉसिबल है, C4 पॉसिबल, इवन C6 इज आल्सो पॉसिबल, ओनली C5 इज नॉट पॉसिबल. वो हम इसमें प्रूव करेंगे. राइट, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेना. बाकी द रेस्ट ऑफ डिटेल्स हाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दी सिमेट्री एलिमेंट्स दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द होल टॉपिक ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. ओके, and again I'm telling you this question is very important. okay, तो mark करके रख लेना. ठीक है, so एक condition है, देखो, translational condition of translational symmetry. what do you mean by condition of translational symmetry? जो भी मैं बता रही हूँ, एक क्रिस्टल में C2 एक्सिस पॉसिबल है, C3 या CN एक्सिस पॉसिबल है, ये वाले पॉसिबिलिटीज जो है दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रांसलेशनल सिमेट्री, लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री. And what law of translational symmetry says? According to law of translational symmetry, the distance between any 2 points should be equal to a unit vector or an integral multiple of this unit vector, that is MA. ठीक है, are you getting this? Suppose अगर आपने एक क्रिस्टल को किसी डिग्री से एक रोटेशन एक्सिस में रोटेट किया, राइट, एंड सपोज एक पॉइंट A था, now that point is changed to another point X, and एक point B था, now that point is changed to another point Y, XY. ठीक है, so let us suppose that AB, distance between AB was by unit vector A, right? ये जो यहाँ पे A mention है, A is a unit vector. Suppose before you do the rotation, suppose the distance between AB is A, which is known as a unit vector, और उसको rotate करने के बाद the two new positions X and Y, that should be an integral, that should be equal to either A or that should be integral multiple of A, that is MA. Then only we can say that that axis of rotation is following the law of translational symmetry and that rotation axis can exist in that particular crystal. Is it clear, bachche? Translational symmetry. I'll explain to you again with the help of a diagram in this same example itself. अभी थोड़ा बहुत समझ आया आपको? What do you mean by translational symmetry? हाँ जी, I want some response, yes or no. Yes, ma'am. So now we will prove that on the basis of this only we will prove that कि 5-fold axis rotation possible नहीं है. So if a crystal has a 5-fold rotation axis, अगर C5 axis है तो condition of translational symmetry is not fulfilled. ये fulfill नहीं होता, so that's why we can say that C5 axis of rotation doesn't exist. But now we'll say कि how it is not fulfilled. ये fulfill कैसे नहीं हो रहा, right? An n-fold, जो मैंने definition बताया आप लोगों को, ये है, देखो, an n-fold axis of rotation, और इसको आप CN भी लिख सकते हो generally. A CN axis of rotation means if the crystal is rotated by an angle 360 degrees and the new configuration in the crystal will be completely identical to the original one. This is fine? Okay?
So now coming to this particular problem, right? इसके लिए we will consider this figure, right? So पहले समझो, don't write it, अभी पहले समझ लेना. I'll give you time to note it down and to draw it also. First, what you will see is we will take 2 points P2 and P1. P2 and P1 are क्या है? These are two lattice points in a crystal, original, without and before any rotation. Just forget about all the points which are being drawn in this figure. पहले P2 और P1 पे फोकस करो. P2 और P1 कोई भी दो ऐसे lattice points है उस crystal में. ठीक है. फिर इसके बाद we will see that suppose we are having an axis of rotation here, P2, which is passing through P2, right? And now we are rotating the whole crystal by an angle 360 degree upon 5. नहीं, 360 degree upon 5 नहीं, कोई भी angle theta से हम इसको rotate कर लेते हैं. Is this clear, बच्चों? Let us consider that P2 is a lattice point in the original crystal and passing through P2 there is a rotation axis. और उसी rotation axis पे let us rotate this whole crystal by an angle theta. I'm not saying here 72 degree. अभी देखते हैं कि कोई भी angle theta से हम इसको rotate कर लेते हैं. फिर बाद में हम possibilities देखेंगे कि theta के क्या possibilities हो सकता है. Right? So now after rotating, let us assume that P2 position जो है now it has been changed to P4 position. Rotate करने के बाद let us suppose P2 has been shifted to a position P4. Similarly, in another case, let us assume that suppose एक P1 point है, lattice point है, and let us discuss a rotation axis passing through P1 और उसी rotation axis के through let us rotate this crystal again by an angle theta. Now, after that rotation, let us suppose that P1 point जो है now has been shifted to a position P3. Is this clear up to this, बच्चे? Okay or not? Yes, ma'am. Let me know. P2 और P1 जो है ओरिजिनल क्रिस्टल में दो लैटिस पॉइंट्स हैं, राइट? हम मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि मैं 72 डिग्रीज रोटेट कर रही हूँ, कोई भी एंगल थीटा से हम इसको रोटेट करते हैं. पहले एक एक्सिस ले लेते हैं जो P2 पास कर रहा है, which is passing through P2, and let us rotate this whole crystal by an angle theta. And let us assume that P2 position, now P2 has been changed to P4. अब पहले P4 था, अब now it is lying at a point P4. P4 में चला गया. Now in another case, ये P1 जो है another axis ले लेते हैं which is passing through P1 और उसी क्रिस्टल को दोबारा से मतलब थीटा डिग्री रोटेट करने के बाद let us assume that P1 पोजीशन जो है P3 में चला गया. Right? So now we have got P3 and P4 are the new positions of P1 and P2 respectively. Right? So according to law of translational symmetry, suppose ये वाला P2 और P1 position जो है unit vector let it be A, distance between P1 and P2 be A originally. Now after the rotation, इन दोनों के बीच में distance जो है let us assume that it is something which is equal to MA. Right? और MA जो है may be equal to A, it may not be equal to A also. Right? So if this rotation axis will exist, the law of translational symmetry should be followed. Law of translational symmetry follow करने के लिए MA जो है it should be an integral multiple of A. यहाँ तक ठीक है बच्चे? The logic which I am putting here, अगर translational symmetry follow करना है तो MA जो है should be an integral multiple of A. Integral multiple of A का मतलब है M should be either 1, 2, 3 or so on. It cannot be a fraction. Yes or no बताओ यहाँ पे. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now let's come to the derivation. Let's see. Let's see कि थीटा के कौन-कौन से which values of theta are possible. और अगर 5-fold axis होना है तो थीटा is equal to 72 डिग्री जो है possible है या नहीं वो चेक कर लेते हैं. अगर possible नहीं है according to this, then we can say that C5 axis is not possible. That is the procedure that we have to follow, right? So according to law of translational symmetry, now आप draw कर सकते हो, कर लो बेटा आप लोग draw ये. पहले P2 and P1 now shifted, P2 shifted to P4, P1 shifted to P3, and distance between them is MA.
ठीक है बच्चे, ड्रॉ कर लिया, और जो लिखा हुआ है वो वही Yes, है ma'am. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल सिमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P3 एंड P4 शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ A। इसका मतलब है P3 P4 इज इक्वल टू MA, और अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम MA इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर एक B है, इधर एक B है, तो A प्लस ट्वाइस B। और अगर B इज इक्वल टू 0, अगर B 0 है तो ऑब्वियसली MA विल बी इक्वल टू A, ठीक है ना। So now let us drop a perpendicular from P2 to here, and ये जो position है this is X, this is perpendicular. So now in the right triangle अगर थीटा डिग्री से रोटेट करोगे तो ये वाला जो है it will be equal to theta. If you rotate this point P2, rotate this crystal by an angle theta, then P1 के new position P3 जो है it will be, ये वाला angle जो है it will be equal to theta. So that's why this angle is equal to theta minus 90 degree. No, एक सेकेंड, ये थीटा नहीं, एक सेकेंड है, तो रोटेट दिस 90 है। If this is angle theta, okay, this is theta, right? ये थीटा है, सॉरी। So that ये वाला एंगल जो है, let me go back. This will be equal to theta minus 90 degree. Theta is an obtuse angle, right? हाँ, ठीक। So now, see, if we consider this right, ये वाला नहीं है theta. This is not theta, okay? Sorry. If we consider this right triangle, देखो, this one is the right angle and this one is the hypotenuse, okay? So sine of this angle will be equal to B upon A, opposite side by hypotenuse, B upon A, right? And now, so what we are trying is, we are trying to find a value of B. So B will be equal to A sine theta minus 90 degree, or you can say minus A cos, or A minus cos theta, right? This is okay, बच्चे? माइनस ऑफ A cos theta, फिर उसके बाद इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, P3 P4 is equal to MA is equal to A minus twice A cos theta, ठीक है। So यहाँ से if you want to find out cos theta is equal to 1 minus m upon 2. A है तीनों में कॉमन, तो कैंसिल हो जाएगा, cos theta is equal to 1 minus m upon 2. लिख लिया सबने? अच्छा, ये ऊपर वाले में ना, इसमें ये लिखो, नॉट राइटिंग 360 डिग्री बाई 5, जस्ट राइट इट 360 डिवाइडेड बाय थीटा, ये कर दें 360 divided by n, sorry, this is n, and degrees is theta degrees, ठीक है। We are rotating the crystal by an angle by 360 degree upon n, and which is equal to theta degrees, ठीक है, ये होना चाहिए 360 degree upon n, which is equal to theta degrees. बच्चे, shall I move to the next slide? करूँ ना चेंज? And now we will see the possibilities. आपके पास क्या है? Cos theta is equal to 1 minus m upon 2, right? So from
now we'll make a table. Okay, so m जो है according to law of translational symmetry, m should be an integer, right? So m can be either 0, 1, 2, 3 तक हम discuss कर लेते हैं, right? So when m is equal to 0, what will be the value of cos theta? What m is equal to 0, the value of cos theta is यहाँ पे according to this equation 1 by 2. When m is equal to 1, cos theta is equal to 0. When m is equal to 2, cos theta is equal to minus 1 by 2. When m is equal to 3, cos theta is equal to minus 1. तो ये वैल्यू जो है हमने उस एक्सप्रेशन में से निकाला है, ठीक है? दैट इज cos theta is equal to 1 minus m upon 2. ठीक है? So now when cos theta is equal to half, theta will be equal to obviously 60 degree. When cos theta is equal to 0, theta is 90 degree. Theta is 120 degree when cos theta is equal to minus half, and theta is 180 when cos theta is equal to minus 1. जिनके m के values corresponding values is 0, 1, 2 and 3. ठीक है? तो यहाँ पर बीच में, and when these values, according to these values of theta, the degrees of rotation, n value जो है r corresponding 360 by 60 is 6, 360 by 90 is 4, 3 and 2. So the value 5 which should come in between 4 and 6, that is not appearing in this calculation. When we apply the, और ये कहाँ से आया है? This has come, this quantization has come when we apply the law of translational symmetry. So from this we can prove, we can show, justify that a C5 axis or an 5-fold axis of rotation cannot exist in any type of crystal. ठीक है बच्चे, एक बार इस टेबल को ध्यान से देखो, and you have to write it also. Any doubt? This question is very important. Mark it. Okay or not? Any doubt? Anybody? Any doubt? No. All clear? Yes. So यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है आपने, which I haven't written here, कि from this table or from this observation we can say that theta is equal to 72 degrees. That is n is equal to 5 is not possible, because when n is equal to 5, m cannot be an integer, and which will violate the law of translational symmetry. So that's why we can say that the law of C5 or 5-fold axis of symmetry cannot exist. ठीक है, वो चीज आपने लिखनी है when you are done with your derivation. ठीक है. So now coming to very simple things in a crystal which I think are very interesting, right? ज़्यादा mathematical part नहीं है, ठीक है. So you have seen so many crystals like diamonds and so many quartz crystal and all, right? And there are people specialize in polishing this crystal and in cutting the edges of this crystal. Diamond cutting, matlab, it's a very famous industry, right? So what we should know here is, and कई लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, they exactly know कि कौन सी पोजीशन पे मतलब क्लीव करेंगे या ब्रेक करेंगे तो it is easier, right? So that we can see all the faces of the crystal, right? So here we have for that we will study crystal cleavage, that is crystal breakage and development of its faces. मतलब कि क्रिस्टल में कई सारे प्लेन्स होते हैं, राइट? सो उन प्लेन्स में से कौन से प्लेन में अगर हम उसको कट करेंगे तो ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस है, व्हाई एंड ऑल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है, दैट वी विल स्टडी. So we can see that we can say that अगर आपके पास बहुत सारे lattice points, so lattice point I think by far you must be knowing what do you mean by lattice point. अगर आपके पास एक crystal है, उस crystal point में कई सारे various lattice points you have, then उन lattice points में we can draw so many or infinite number of planes. कई सारे planes, अलग अलग planes draw कर सकते हैं,
राइट और उन प्लेन में से एक प्लेन जो है क्लीव करने के बाद इट विल डेवलप इनटू अ फेस ऑफ अ क्रिस्टल। फेस ऑफ अ क्रिस्टल क्या होते हैं? उन प्लेन में से एक प्लेन में से हम काटेंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली डेवलप इनटू अ फेस ऑफ द क्रिस्टल, राइट? बट हाउएवर, even though we have infinite planes, we can draw infinite planes passing through various lattice points, only a few of those planes can, few faces can develop. ऐसा नहीं कि any of the plane can become a face of the crystal. As कई बार ऐसा होता है कि it is very difficult to make this, but चाह के भी if you're not able to make this particular plane the face of a crystal. The reason behind this is that plane has the probability, only that plane has the probability to develop into a crystal which has maximum interaction and a minimum energy. Maximum interaction between the lattice points. यहाँ पे interaction में you should not be confused. एक डायग्राम में दिखाती हूँ आपको. वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन. ठीक है, लैटिस पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पर जो मैंने डॉट 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 लिखा है ना, दीज आर द वेरियस लैटिस पॉइंट्स ऑफ अ क्रिस्टल. व्हाट आई मीन बाय सेइंग इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वेरियस लैटिस पॉइंट्स का मतलब है, देखो ये वाली लाइन जो है, लेट्स कॉल इट लाइन 1, let's call it line 2, let's call it line 3, let's call it line मतलब plane, ठीक है, let's call it plane 4. ठीक है, ये plane 1 जो है, this is one plane, plane 2 is another, plane 3 is another, plane 4 is another. So these are planes passing through various lattice planes, various lattice points. But we have to see कि इन सारे planes में से which of them has the higher probability to develop into a crystal. प्लेन 1 2 या 3 4 में से कौन सा प्लेन है जिस which has the highest probability कि फेस में डेवलप हो जाए, right? So that is based, that depends on the fact that those plants which have the maximum number of lattice points will have the greatest probability to develop into a crystal. Is that clear, बच्चे? Hello. Yes, ma'am. Those plants, Yes, those ma'am. planes which have the maximum number of lattice points, उसको हम बोलते हैं which has the maximum lattice points, site density भी कहते हैं इसको. Density मतलब thickness of those points, right? Those planes which have the maximum number of lattice points, or those planes which have the maximum lattice site density, has the greatest probability to develop into a crystal. ठीक है, the reason being, since they have the maximum number of lattice points, they have the maximum density, they have maximum interaction between the various lattice points. जैसे कि suppose इसमें देख लेते हैं, एक plane 1 है, अच्छा plane let's call it plane 5 जो मैंने name mention नहीं किया, which is passing through one of the axis. Plane 5 जो है इन सारे planes में से this is the only plane which is passing through, or let's call this one plane 6. There are two planes here which are passing through. Let's call it, अगर ये y axis है आपका, अगर ये x axis है, तो plane 5 is passing through the y axis and plane 6 is passing through the x axis. So it is usually observed that planes parallel to the axis, either x axis, y axis, z axis, have the maximum number of lattice points lying on them. तो अगर आप compare करोगे plane 5 or plane 6 with plane 2 3 and 4, you can see that these planes parallel to the axis is having maximum number of lattice points or maximum number of lattice density. Okay, and since they have the maximum number of lattice points, there is maximum interaction between these various lattice points, so they have the maximum stability. Okay, is this okay up to this? And these planes have the maximum probability to develop into a crystal or cleavage होने का सबसे ज़्यादा chances है इन planes का. This is planes parallel to the axis. ठीक है? What all are written here? A crystal with a large surface density, maximum number of lattice points, would result into more interaction. एक और reason है कि they have minimum energy and hence would show a greater probability to form a crystal space. एक और चीज है कि when we have another plane here, another plane parallel to fifth plane. Suppose we have another plane here, and suppose you have another plane here. Later on, we will again observe that planes parallel to the axis x, y, or z axis, in
दो प्लेन्स के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है दे आर द मैक्सिमम। इसका मतलब है कि व्हेन टू प्लेन्स हैव द मैक्सिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इनको क्लीव करना ज्यादा आसान है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दीज प्लेन्स हैव द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ क्रिस्टल। अगर इस वाले प्लेन को कंसिडर करोगे, इफ वी इस वाले प्लेन में इफ वी कंसिडर अनदर प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, this will be like this, right? And if you compare the interplanar spacing between these two and these two, you will observe that the interplanar spacing between these two planes, that is planes parallel to the axis, they will always be greater than the other plane. So that's why these planes have the greater probability to get cleaved or broken. ठीक है बच्चे? Okay, fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये थ्री चीजें इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस लैटिस पॉइंट्स, मिनिमम एनर्जी, greater stability, and maximum interplanar spacing which make it easier to cleave. So do you have to remember these points? ठीक है? So now coming to, लिख लिया ना ये सारे आप लोगों ने? No, ma'am. लिखना है तो लिखो। ठीक है, आई थिंक यू कैन चेंज। ये एक सैम्पल डायग्राम है, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर ओन ऑल्सो। अच्छा अच्छा ये इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वाले पिक्चर में बता दिया था, बट स्टिल वी हैव, सिंस वी हैव दिस पिक्चर, देखो यहाँ पे कई पैरेलल प्लेन्स है। ठीक है, ये वाली प्लेन जो है, दीज थ्री सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स आर इटसेल्फ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। सपोज वाई एक्सिस पे पैरेलल है ये तीनों। I have already explained in the before slide, previous slide, right? And again another, these set of planes, again these are parallel planes, but these are not parallel to any of the axis. Again ये C set जो है, again this is another set of parallel planes, but still not parallel to any of the axis. So from this comparison, this three set of planes shows you a comparison of the interplanar spacing के बीच में जो distance जो है, this is greater than the distant interplanar spacing between this B set and C set. So these have a greater probability to get broken or cleaved or develop into a face of a crystal. So क्या लिखा? Planes having maximum highest number of lattice points also has a maximum distance of separation between them, which I have already told you before. Hence, minimum interaction between two consecutive planes and better chances to get fractured and cleaved into a crystal plane or crystal face. बल्कि ये सारे लेटिस पॉइंट जो है ना, एक ही क्रिस्टल के लेटिस पॉइंट से उसी में ड्रॉ किया गया है सारे जो प्लेन जो है। इट्स नॉट लाइक कि ये क्रिस्टल पॉइंट जो है ये अलग क्रिस्टल का है, ये क्रिस्टल पॉइंट जो है, दीज आर क्रिस्टल पॉइंट्स ऑफ द सेम क्रिस्टल। तो उसी में हमने अलग अलग प्लेन्स ड्रॉ करके चेक किया है कि विच हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू डेवलप इनटू अ क्रिस्टल एंड फॉर व्हाट रीजन। ठीक है बच्चे? मैम मैम प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा तो मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इंटरेक्शन, अच्छा इंटरेक्शन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन वी कैन टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। एक तो इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस लेटिस पॉइंट, इन तीनों के बीच में एक ही प्लेन में जो इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू, अगर इफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू लेटिस पॉइंट विच आर ऑन द सेम प्लेन, अगर ये ज्यादा है तो मिनिमम एनर्जी है, राइट? अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखा जाए तो जिनके बीच में कम इंटरेक्शन है उस प्लेन का ज्यादा चांसेस है क्लीव होने का। सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन आई से इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन दिस टू विद इन द सेम प्लेन, इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस प्लेन, दोनों के ऑपोजिट इफेक्ट है, राइट? ओके मैम, ठीक।
Chalo. So now we are talking about planes in this 3-4 slides, right? But how do we give designation of these planes? These planes must have some specific, matlab, which plane actually means what? Matlab, ठीक है, if a plane is parallel to the x-axis, if a plane is parallel to y or z-axis, how do we specify them? By what notation? Right? So उसके लिए we have to study some very important terms which are known as Weiss indices, which is written here, and another is Miller indices, which are very important, right? So designation of planes को कैसे हम designate करेंगे? They can be designated by observing their orientation. मतलब x axis में कितने position पे है, y axis, जैसे कि suppose एक coordinate position है, एक point को हम कैसे designate करते हैं? We designate it from by seeing the distance from the origin, right? So similarly here also a crystal plane can be designated by specifying its orientation from the various axes. ठीक है? So उसके लिए what we require is if you have a particular plane, we require to know what are the particular intercepts it makes that the plane is making along the x, y, and z axis. ठीक है? Suppose let me draw a diagram here. If we have a plane here, suppose this is x, suppose this is y, and suppose this is z, and suppose we have a plane here. कोई भी random plane draw कर रही हूँ मैं. ठीक है? And suppose if this plane is making an intercept A on the x-axis, if it is making an intercept B on the y-axis, and it is making intercept Z on the C on the z-axis, then specifying these intercepts, mentioning these intercepts is important for the designation of the planes or orientation of the planes. So this is what is most important. We need to know what intercepts it is making on the x, y, and z axis. Right? Is this okay? So now coming to an important law which is known as the law of rational indices. Okay. So what actually is law of rational indices, which is related to Weiss indices, is we choose unit length A, B, and C along the three axes x, y, and z. मतलब let A, B, and C are the unit vectors or unit length along the x, y, and z axis. Right. So according to law of rational indices, these three unit vectors, इन three unit vectors को हम ऐसे choose कर सकते हैं ताकि the ratio of each of the intercepts h, k, and l to the corresponding unit length is either an integer or a ratio of two integers. Let me explain to you. Suppose A, B, and C are the unit vectors, right? Suppose let A, B, and C be the unit vectors and H dash, K dash, and L dash be the intercepts they are making along the X, Y, and Z axis. यहाँ तक ठीक है बच्चे? I'm going to explain to you the law of rational indices. अगर A, B, and C जो है ये unit vectors है along X, Y, and Z axis, और H dash, K dash, and L dash are the intercepts the plane is making along the X axis, Y axis, and Z axis. Then according to law of rational indices we can say that A, B और C को हम ऐसे चूज कर सकते हैं ताकि इन दोनों का रेशियो जो है वो या तो इंटीजर हो या रेशियो ऑफ इंटीजर्स हो. दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस, और इन रेशियोज को हम Weiss indices बोलते हैं. These ratios are known as your Weiss indices, the ratio of the intercepts to the corresponding unit vector. Is it okay or not? थोड़ा बहुत try to understand. It is not that difficult. Clear about law of rational indices? हाँ जी. Yes, First year honors. कोई डाउट है इसमें? What do you mean by either an integer or ratio of two integers? What do you mean by this? Can anybody explain to me what I mean by saying या तो ये जो ratio जो है integer होना चाहिए या फिर ratio of integers होना चाहिए? What do you mean by this? हाँ बोलो. I think integer value आएगी जो भी आएगी. यहाँ पे according to is 1/2 is possible. H dash upon A is equal to 1/2 possible है according to law of rational indices, according to my definition.
1/2 पॉसिबल है? Yes, ma'am. Impossible. 1 Yes, upon ma'am. 2.5 Yes, ma'am. 1 upon 2.5 पॉसिबल है? No, ma'am. 1 upon 2.5 पॉसिबल है कि नहीं? No, ma'am. है मैम, वही है Yes, ma'am. 1 पॉसिबल upon है, 2.5 मैम 1 upon पॉसिबल 2.5 नहीं है पॉसिबल है। मैम। यस मैम पॉसिबल सोच के जवाब दो। No, not Ma'am, yes, possible. yes. 5 ही लिख देंगे ना मैम उसे। मैम पॉसिबल मैम आई बट हम थिंक। डेसिमल हटा के ऊपर 0 भी तो कर सकते हैं, सो 2/5 पॉसिबल आ होगा। जाएगा। 1 upon my question is 1 upon 2 possible है 1 upon 2.5 possible है कि नहीं? what do you mean by an integer? integer क्या होता है? गिरिया An पहिला integer मैच can नहीं खेल जाना an था कि integer कौने टीम में से जौन जीती तौने खेल फाइनल। कौन है? गिरिया Mic गिरिया whose mic is on? एक बार पहिला बता मैच दो, नहीं खेल ना सेमीफाइनल मैं कल तो नहीं कि देख पा रही दोनों में हूँ। से जौन whose जीती mic तुम is मत खेल। on? माइक किसके ऑन है? बताओ ये माइक किसका ऑन था अभी? हाँ जी, whose mic was on अभी just right now a few seconds back? Is 2.5 an integer or not? Hello? No, ma'am. No, ma'am. 2.5 इंटीजर नहीं है तो 1 upon 2.5 पॉसिबल होना चाहिए कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस अकॉर्डिंग नहीं होगा। No, bro। ma'am. वही तो इसका मतलब है कि ए बी सी को हम इस तरह से चूज कर सकते हैं ताकि इसका रेशियो जो है या तो पूरा एक इंटीजर हो या रेशियो ऑफ इंटीजर्स हो, बट रेशियो 1 upon 2.5 विल नॉट बी अलाउड। तो एबीसी को इस तरीके से चूज करना है, right? And these ratios, whether these are integers or ratio of integers, they are known as Weiss indices, ratio of intercept to the unit vector. ठीक है बच्चे? More important than the Weiss indices is the Miller indices. ठीक है, तो दोनों interrelated है। तो Weiss indices आपके पास, suppose if you have the values of the unit vectors and if you have the values of the intercepts in terms of the unit vectors, then you can always calculate or convert Weiss indices into Miller indices. ठीक है, कैसे करना है? पहले आपके पास Miller Weiss indices हो गया तो you will first take the reciprocal of the Weiss indices. ठीक है, तो उन Weiss indices का reciprocal जो है, if they are some integral values, suppose 1 1 2, all are integers, then you don't need to do anything. But if there are some fractions coming like 1/2 3 or 2, तो उसको पूरा इंटीजर में करने के लिए you have to multiply it by a smallest integer, smallest number, ताकि आपके पास you have all in terms of integers. The final set of 3 integers is known as the Miller indices. ठीक है, so Miller indices are more conveniently used rather than Weiss indices. Miller indices can be obtained by first taking the reciprocal of the 3 Weiss indices, right? And then multiplying by the smallest number to make them all integers. The 3 resultant integers are known as Miller indices and are represented by HKL, जो है a conventional way है for representing Miller indices. ठीक है, so now coming to the conversion. If h dash upon a is equal to suppose 2 है, k dash upon b, these are the Weiss indices, so I'm putting the values also. Suppose 1/3 है, l dash by c suppose 1/2 है, तो Miller indices पाने के लिए what we will do, we will take the reciprocal of all this. So a upon h dash is equal to 1/2, b upon k dash is equal to 3, c upon l dash is equal to 2. So now we have HKL is equal to 1/2 3 2. So now we are not right now we don't have in terms of all integers. So in order to get it in all integers, इसको we will multiply it by
2, right? So 2 से multiply करोगे तो 2, 6 and 4. So 1, 6, 4 are your final Miller indices for a plane whose intercepts are h dash k, whose intercepts are 2, 1 by 3 and 1 by 2 along the x, y and z axis. ठीक है, ओके. Yes. तो एग्जाम में मिलर इंडाइसेस निकालने के लिए पूछा जाएगा आप लोगों को इन ऑल्टरनेटिव वेज कि सपोज यू मे बी गिवन ए पर्टिकुलर प्लेन विदाउट मेंशनिंग कि इसका इंटरसेप्ट क्या है और इसका मिलर इंडाइसेस निकालो. दैट इज one way ahead. Another is you may be directly given the intercepts ki thrice A, 2B, 4C, these are the intercepts and find out the Miller indices. So you check the numericals given in KL Kapoor. easy सा है, कोई उतना दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है. But it will come in exam. Calculation of Miller indices for planes in a crystal. ठीक है. So let's take some examples, the same example which are given in KL Kapoor, right? So we have, you have been given 4 sets of planes, set A, set B, set C and set D, right? Set A, let us consider about set A. Suppose आपका x axis, y axis and z axis, suppose आपका the coordinate axis इस तरीके से है. Suppose अगर ये है parallel to the z axis है ये, right? ये x y इस हिसाब से, ठीक. नहीं, A B अच्छा ठीक है. This is x. Forget about this. This should be x axis, right? Axis. This is y. The z should be that way. ठीक है. So if we consider set A, it is a set of planes parallel to the z axis. ठीक है. So any set of any plane parallel to जिस axis पे वो parallel है ना, उस plane का intercept जो है that will be infinity, right? I think that is clear to you. And suppose this plane जो है first plane, second plane, third plane, this is making an intercept. A is the this thing क्या है unit vector and it is making an intercept A along the x-axis, making intercept B along the y-axis, and since this is parallel to the z-axis, it is making an intercept infinity, right? And for this second plane, it is making an intercept 2A along the x-axis, 2B along the y-axis, and infinity along the z-axis. So similarly here, thrice A, thrice B, and infinity. So how to find a Miller indices of this? Miller indices will be equal to unit vector, ऊपर जो है ना unit vector है, नीचे जो है intercept है A. We are considering for plane 1, this plane, right? So B by B, C upon infinity. So it becomes आपका 1 1 0. तो 1 1 0 इसमें कोई दूसरी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं. 1 1 0 is the Miller indices of this plane. तो सेकेंड प्लेन जो है जो कि पैरेलल है इस फर्स्ट प्लेन से, पैरेलल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर A है तो ट्वाइस है, B है तो ट्वाइस B. सिंपली मल्टीप्लाइंग द इंटरसेप्ट बाय अ कॉमन फैक्टर. दिस मीन्स कि दिस प्लेन्स आर पैरेलल. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटरसेप्ट, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसका 2 2 0 आ रहा है, राइट? तो 1/2 से डिवाइड करोगे तीनों को तो यू आर गेटिंग 1 1 0 again. This means that again it is a
चार्जर ठीक है बच्चे, is this okay? So what we can conclude from this is all parallel planes parallel to each other, they have the same Miller indices. और planes parallel है कैसे पता चला, क्योंकि from moving from 1 to 2, 2 to 3, you can get the second plane by multiplying the first by a factor 2. You can get the again third plane by multiplying by a common factor 3. So these are parallel planes. यहाँ से भी पता चल रहा है, and Miller indices से भी पता चलेगा all parallel planes have the same Miller indices. So what we can say is those Miller indices actually define Miller. When somebody speaks to you about Miller indexes, it is not a single plane, but it tells you about a set of parallel planes. Okay? And one of which passes to the origin, while the others are at a constant distance from each other. Okay? Is this okay up to this? Yes, ma'am. So that's all for today. We'll discuss more about this when we meet on Friday. ठीक है, चलो यहाँ तक कुछ डाउट है तो we can discuss. बाकी सेट बी सी डी का भी आप लोग मिलर इंडाइसेस निकाल लेना, ठीक है. मिलर इंडेक्स निकाल के it is better you send me in my WhatsApp number. Ma'am, what is the timing for tomorrow class? Tomorrow class, Thursday, beta, we have a meeting in the college. This is for the whole department, so nobody will be having a class tomorrow until and unless if there is a class after the meeting. So we have a class, we have a meeting at 12. So we have to reach college by around 11, meeting with the principal. So कल है क्या मेरी आप लोगों के साथ क्लासेस थर्सडे को? वैसे एक क्लास हो गई आज. I'm thinking of taking a class on Friday. So anytime you are free on Friday, if your one of your ACC classes is not going on, then let me know. ठीक है? Otherwise, I will fix another class. Okay? ACC class अगर free हो जाते तो